હેલો, કૃપાલસિંહ ઝાલા, અવાજ આવે છે? यस सर आवे है सर। ओके फाइन। संतोष कुमार? सर आवाज आ रही है आपकी। ओके। अभय? अभय? We will wait for more 2 minutes, okay, so that everybody can join. And Parth Kakkar, am I audible? Yes, sir. Okay. ऋत्विक वाजा, बरोबर છે? અવાજ આવે છે? Yes, sir. हाँ, sir. Okay. So we will start our lecture in the 2 minutes, okay? And what we have seen in the previous lecture, that we need to recall it. You can recall in this 2 minutes what we have done in the what we have learned in the previous lecture. And I suggest you to go through the unit conversion table. If you are not aware about the different unit conversion, let us say 1 meter is equal to how many foot, likewise, okay? So basic unit conversion you must be aware about, because you required to calculate the example in this lecture, okay? So hope that you must be aware about the different kind of unit conversion. That is the first point. Second point, I have given you a task related to the different kind of person, and different task is given to you what you need to submit at the end of the lecture, okay? So you must be ready with that also. So we will start our lecture within 1 minute, okay? So right now we have 17 students are there. We will wait for 25, then we will start. Okay, fine. So let us start our today's session for the surveying subject. Okay. So yesterday, what we have in previous lecture, what we have covered, we are talking about the different types of the scales. Okay. So there are basically two types of the scales. Number one are plane scale. Second one is diagonal scale. Okay. So I'm sharing a screen with you so that you must be aware about that what we have carried out in our previous lecture. Okay. So So first of all, you can write down your roll number in your note in the chat box. Okay. And finally, what we are discussing about is different types of the scales are available. Okay. On your screen right now. So we have already discussed the different types of the scales. So here you can see the what is the definition of the scale that we have already covered. Then what is the difference between the scale and the representative fraction or representation fraction? Okay, so that we have already discussed. Next is we have check out the different types of the scales. Number one is the plane scale, second is diagonal scale. हमने ये अच्छे से समझा था, ठीक है? प्लेन स्केल क्या है और डायगोनल क्या है, इसकी हम बात करेंगे इस लेक्चर में, डायगोनल स्केल की। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा जो एग्जांपल हमने आपको दिया था वो आपने किया होगा शायद।
ये हमने प्लेन स्केल समझा था। और ये वाला जो एग्जांपल है मैंने आपको कहा था कि आप अच्छे से एक बार ड्रॉ करके देखना, आपको कुछ डाउट मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है? अगर आपको डाउट नहीं है तो मैं समझ लूंगा कि आप जो है आपने कुछ नहीं समझा है। अगर डाउट है तो आप समझने की ट्राई कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें अगर डाउट नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप पहली बार ये पढ़ सकते हो या फिर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इसमें डाउट आपको मिलेंगे ही। ठीक है, तो आप मुझे बताए, पहले ये बताइए कि कितने लोगों ने ये कंप्लीट किया है, ये अपने खुद से अपने घर पे जाके जो है वो ड्रॉ किया है। दे कैन हेलो सर। सिंपली, यस वेट अ मिनट, सिंपली दे कैन राइट डाउन द यस, कि जिन्होंने भी ये प्रैक्टिस किया है, ठीक है, वो आप यस लिख दीजिए, जिन्होंने नहीं किया है वो नो कर दीजिए। जिसको यस बोलेंगे मैं उसको क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, अनुज नो, वाई? केविन, अभय, राजकुमार, केम नहीं? ઓકે એનીબડી? બસ આટલા જ છે ક્લાસમાં? બીજા બધા? संतोष, उमेश कुमार, क्यों नहीं किया आपने? दीपक डन, ओके। सर वो थोड़ा असाइनमेंट सब था ना, वो बनाने लगे तो ये छूट गया सर। हाँ हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि आप असाइनमेंट ही बनाते रह जाओगे, है ना। दूसरा, चलो सुमित, आपने क्यों नहीं किया? सुमित, હા સર. हाँ केम बाकी रह गयो? સર એસાઇનમેન્ટ કાલ કેટલા હતા લખતો હતો. હા, એટલે હું એ જ કહું, અસાઇનમેન્ટ કેટલા બધા ભેગા થયા એનું કારણ है ना, તમે પોતે જ છો ને કારણ। So that is why I'm insisting you to be a regular. Regular in a sense કે એવું નથી કહેતો તમે કે ભાઈ તમે જે કમ્પ્લીટ તમે જે ટાસ્ક આપવામાં આવે છે એના ઉપર તમે આખો દિવસ એના ઉપર ચોંટ્યા રહો. I am not saying that, but at least you must be aware about that, what kind of preparation, what kind of learning I require from each subject. Okay, so now you are mature enough, so you need to understand that why we are learning this subject, okay, and what are the importance of this subject in our life, because this is the subject you can touch, you can relate with the real life। हैं, आप रोड पे जा रहे हो तो आपको सर्वे दिखना चाहिए, दिस काइंड ऑफ दिस सब्जेक्ट इज। ठीक है, आप रोड पे जा रहे हो, आपको ट्रैफिक लाइट्स दिख रही है तो वो क्यों है, वो सर्वेइंग में आता है। ट्रैफिक कंजेशन क्यों होता है, वो भी सर्वेइंग में ही आता है। ठीक है, तो आप इस सब्जेक्ट को रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए आपको इस सब्जेक्ट पे तो मतलब जो मैं बोलूँ वो तो आपको डिफिकल्ट डेफिनेटली आपको ये करना ही है ना। so that is the main concern about this subject। ઓકે, રાજકુમાર વૈષ્ણવ, તમારું શું રીઝન છે? હાલો સર, હા, એમાં એવું છે સર કે હું ગામડે વહી ગયો હતો ને એટલે અને અસાઇનમેન્ટ ને એવું બધું હતું સર, અને બુક્સ લખવામાં રહી ગયું હતું. તો એના માટે તમારી પાસે ઈ કન્ટેન્ટ અવેલેબલ છે। સી એવરીબડી, I have uploaded all the relevant material in your e-content tab, so you can find out this presentation in your e-content। હવે તો મિડ સેમેસ્ટર એક્ઝામ પણ નજીક આવી ગઈ હે। ના સર, કરી લેશું. ઓકે, so everybody you Sorry, must sir. be હા, you must be aware about this kind of thing। મિડ સેમેસ્ટર નજીક છે, તેની પ્રિપેરેશન માટે તમે કેવી રીતે આગળ વધશો, that is the also important thing। ઓકે ઓકે Okay, ફાઇન। જેટલા લોકોએ કમ્પ્લીટ કર્યું છે એમાં કોઈને ડાઉટ છે? नहीं सर। ઓકે, કૃપાલ સિંહ ઝાલા, તમે લગભગ એડી સબ્જેક્ટમાં તમે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છો, હે? હા સર, ઈડી આવી Yes, ગયું છે. that is the simple task। Okay, હા સર. okay, so I hope that you are getting all the points which I have covered in the plane scale topic। if you have any kind of doubt, you can simply refer this solution, your all doubt should be clear, okay, or must be clear regarding the plane scale। now let us move to the diagonal scale, okay, but before that I want to check out certain kind of the examples right now with respect to the scale and representative factor। okay, so we will do it this after later words in this lecture, but before that I want to show you something that I have given you one unit conversion table। okay, so in that table
how you can utilize your table that I am showing you. Okay. On your screen right now, a whiteboard is there. નથી આવતું. Okay. એક મિનિટ હા. I'm resharing it so that you can get the what I'm trying to convey you. This thing I want to discuss with you that yes, now it is visible to you on your screen. So first and foremost thing, I want to discuss 2 points with you. Number one is we have to talk about the scale. Okay. Second word is RF, that is representative fraction. Okay. So you need to understand both these two words. Let us say for example, मैं आपको स्केल का एग्जांपल देता हूं. तो मैंने अगर ऐसा लिख दिया कि भाई ग्राउंड का जो है 1 किलोमीटर है वो मेरे मैप में 1 सेंटीमीटर होगा. गेटिंग दिस और नॉट? तो ये हो गया आपकी स्केल. ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो ये आपकी स्केल है कि मैंने जो ग्राउंड का जो हमारा डिस्टेंस है 1 किलोमीटर उसको हमने मैप पे बोल दिया 1 सेंटीमीटर. एक होता है आरएफ. तो आरएफ जो है वो स्केल में से आपको कन्वर्ट करना पड़ता है. कैसे आप करेंगे? जैसे कि हमारी स्केल है, इसका मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रहा हूँ. ठीक है, हमारी स्केल क्या है हियर our scale is 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, आपको लिखते जाना है. ठीक है, इन योर नोटबुक 1 सेंटीमीटर इज, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि हाउ टू कन्वर्ट स्केल इनटू आरएफ. ये मैं आपको एग्जाम में भी पूछूंगा. ठीक है, और यहाँ पे आपको याद रखना है. तो आपको आरएफ फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? आरएफ जो है वो फाइंड करना है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि हमारी स्केल आपको दी गई होगी. ठीक है, तो इसको हम आरएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हमारे स्केल का जो सेंटीमीटर वाला यूनिट है, या फिर हम इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करेंगे, या फिर इस सेंटीमीटर को किलोमीटर में तब्दील करेंगे. ठीक है, कन्वर्ट करेंगे. तो हमारे लिए क्या होता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है. ठीक है, दूसरी बात क्या है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. तो हमने पिछले लेक्चर में किया था. ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, आरएफ इज इक्वल टू, हम जो ये वाला किलोमीटर है इसको हम क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? हम जो ये 1 किलोमीटर उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर. सो दैट मस्ट बी इज इक्वल टू, hence RF is equal to 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, ये हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 हो गया, और उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से ताकि ये सेंटीमीटर बन जाए. ठीक है, हमने सिंपल क्या किया कि 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया. ठीक है, ये आपको विजिबल हो रहा है? मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये. यस सर. ओके फाइन, ओके फाइन. सो अल्टीमेटली हमारा आरएफ की वैल्यू क्या हुई? हेलो 1 सर. सेंटीमीटर. यस, हु इज दिस? हाँ सर, कौन बोल रहे हैं सर? कुछ काम इमरजेंसी है इसलिए सर जाना पड़ेगा, तो लीव हो सकते हैं? हाँ, आप चले जाए, आप मुझे रीजन सेंड कर दो. ठीक है, ओके. हाँ, रीजन अभी मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो. ठीक है, ओके सर. ओके. सो आवर अल्टीमेट आरएफ वैल्यू इज इक्वल टू 1 divided by 1 lakh. Is it clear? So what we are getting is RF is equal to 1 gem. इसको हम ऐसा बोल सकते हैं
This is the exact right value. How to calculate, how to convert your scale into the RF. Okay. So are you aware about this? ये हमने एग्जांपल पिछले लेक्चर में हमने किया था, ठीक है? इसमें कोई डाउट है? एनीबॉडी? नो सर। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? तो यहाँ पे बाजू में आपके सामने ये एग्जांपल तो है ही, इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल आपको मुझे सोल्व करके अभी दिखाना है, ठीक है? कितनी वैल्यू है, जिसको मैं बोलूं उसको वैल्यू बतानी है, ठीक है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपकी स्केल है, मैं आपको बताता हूं कि 1 इंच इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि हमारा ओरिजिनल जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, लेकिन मैं उसको मैप पे 1 इंच दिखाऊंगा। तो नाउ द प्रॉब्लम इज कन्वर्ट स्केल इनटू RF. Okay, so that is your problem. Now give me the solution. You have 5 minutes. You can use your calculator, okay? And here you can see the example is already given, okay? So I'm giving you 5 minutes. So give me the solution. You need to convert inch into the kilometer into the inch. That is it, okay? तो ये solution आप मुझे बताइए क्या होगा, ठीक है? मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, आपको कैलकुलेटर यूज करना है, जो भी करना है यूज कीजिए, लेकिन आपको क्या करना है, मुझे इसका आंसर देना है, ठीक है? अगर आपको कुछ डाउट है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे बाजू में हमने एग्जांपल किया हुआ है, इसकी हेल्प ले लीजिए, ठीक है? फिर आपको एग्जांपल जो है वो ड्रॉ करना है, ये सोल्व करना है, ठीक है? आप मुझे इस एग्जांपल का जो है वो आंसर दे दीजिए, ठीक है? इसमें अगर कोई डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? एनीबॉडी? ठीक है, तो मैंने आपको 2 भाग में डिवाइड कर दिया आपको, ये जो है एग्जांपल। ये आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है? मैंने 2 भाग में, ताकि हम अच्छे से पता चल लगा पाए, ठीक है? आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है? इज इट विजिबल टू यू? ये आपके रेफरेंस के लिए है, ठीक है? ये वाला जो है आपका रेफरेंस के लिए है, और ये आपको सोल्व करना है। कोई डाउट है इसमें? સર હું થોડોક લેટ જોઈન થયો તો શું કરવાનું કઈ ખબર નથી સર. હા, જો અહીંયા બાજુમાં જે છે ને એક્ઝામ્પલ આપેલો છે, આપણે સ્કેલને RF માં કન્વર્ટ કરવાનો છે. સ્કેલ કોને કહેવાય? તો સ્કેલ ઇઝ એ રેશિયો between the distance on your map to the distance on your ground. Okay, so that is the definition of the scale. તો સ્કેલમાં કેવું હોય કે 1 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 કિલોમીટર હોય, 1 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 મીટર હોઈ શકે, એ સ્કેલ થઈ. પણ ઈ સ્કેલને તમારે RF માં કન્વર્ટ કેવી રીતે કરવી, એના માટેનો એક્ઝામ્પલ અહીંયા સોલ્વ કરેલો છે, બરાબર? તમે બાજુમાં જોશો, સિમ્પલ, તમારે આ કિલોમીટરમાં સેન્ટીમીટરમાં કન્વર્ટ કરવા પડે, બરાબર? પછી તો 1 કિલોમીટરને સેન્ટીમીટરમાં કન્વર્ટ કરવા માટે શું કરશો, તો એની પ્રોસિજર અહીંયા આપેલી છે, બરાબર? યુ કેન સી. તમને એ રથી બતાવું. सर wait a minute, I will ask you. ओके प्रसिद्ध, तो यू कैन चेक इट आउट हियर। RF कैसे निकालते हैं, ठीक है? सिंपली हमें क्या करना है, ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर को हमें रेशियो फॉर्म में लेके आना है, ठीक है? ओके, जस्ट चेक इट आउट प्रसिद्ध, सो यू विल गेट द आइडिया। आनंद जोशी, आनंद, हाँ ख्याल आयो स्केल ने सर RF मारे में करो तो? हाँ सर ख्याल करो आंसर है सर हाथ खोटो कहूं तमने वेट ए मिनिट ओके सर હું રેન્ડમલી પૂછું છું, બરોબર? અનુજ Okay. કચોરિયા, યસ સર. આ વસ્તુ ખબર પડી? હા સર.
Okay, find out it. હા સર થઈ ગયો ફાઇન્ડ. Okay. પછી મિત કવાર તમારું શું કેવું છે? હા સર. ઓકે. સુમિત આદ્રોજન? સર કેલ્ક્યુલેટર કરવું. Okay, fine. કરો calculate કરો. So let us break it down different answer from the different people. Okay. So what will be the exact answer of this problem? Okay. So I'm going back to our main screen board. Okay. Okay, fine. So we will solve this. But before that, I want to answer from Meet Kawar. હા સર. તમારો શું આન્સર આવ્યો છે? 1/12 લાખ 1/12 લાખ. હા 12 લાખ. ઓકે, આપણે બીજાને પૂછીએ. આનંદ જોશી, what is your answer? સર શું કહેવાય 1/40,000. 1/40,000. ઓકે, ચલો આપણી પાસે બે આન્સર આવી ગયા. હા, you are an engineer. ઓકે, સો યોર આન્સર મસ્ટ બી કોરિલેટ, કારણ કે એવું તો નથી કે એક ક્લાસમાં અલગ ભણ્યો હોય બીજા ક્લાસમાં. તમારે નોટ ઇન ઇવન ઇન ઇન્ડિયા, વર્લ્ડના કોઈ પણ સિવિલ એન્જિનિયર સાથેનો આન્સર મેચ થવો જોઈએ. ધેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ. ઓકે ઓકે, ચલો બીજાને પૂછીએ. ઉમેશ કુમાર, વોટ ઇઝ યોર આન્સર? સર 1:254,000. 1/254,000. 000. ઓકે, ચલો વન મોર. આપણે વી વિલ ટેક 5. ઓકે, સુમિત આદ્રોજા, તમારો શું આન્સર આવ્યો? 1/0.3 1/0.3. Okay, fine. Then Rajkumar Vaishnav. હેલો સર. હા બોલો. 1/25.4. 25.4. Okay. Kuldeep Dadal. Kevin Parmar. 1/1 lakh. 1/1. 1 ઓકે, ફાઇન. સો આપણે જેટલા પણ વ્યક્તિને પૂછ્યું આપણને એક સાચો આન્સર મળ્યો નહીં. વી ડોન્ટ ગેટ ધ રાઈટ આન્સર, કે આમાંથી કયો સાચો છે આપણને ખબર નથી. સો માઇટ બી યુ હેવ ડન એ મિસ્ટેક. બરોબર, લેટ અસ સોલ્વ ઇટ આઉટ. અને પછી તમે તમારો આન્સર જે છે કમ્પેર કરજો. ઓકે, કમ્પેર યોર આન્સર વિથ માય સોલ્યુશન, એન્ડ આઈ એમ ગિવિંગ અનધર એક્ઝામ્પલ, and that must be the right. Okay, તો અત્યારે હું તમને ખાલી જસ્ટ એક્ઝામ્પલ, જસ્ટ ફોર યોર નોલેજ. So what is our main solution is, we need to convert this 1 inch into the 1 kilometer into the inch. Okay, so you need to write down. હું જે આ રીતે લખું છું ને અહીંયા, એ રીતે તમારે પેપરમાં લખવાનું થાય. ઓકે, so what is the solution? Our scale is 1 inch is equal to 1 kilometer. Okay, so we need to convert kilometer into inch because we want a ratio. Okay, so how will you convert a kilometer into inch? So we have 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay, आपको छोटे छोटे यूनिट में जाना पड़ेगा. सबसे छोटा यूनिट आता है किलोमीटर के बाद मीटर होता है. मीटर के बाद क्या होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ना, सेंटीमीटर जो है वो बड़ा यूनिट है, तो हमें वापस से उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द यूनिट विच हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीमीटर एंड इंच. सो वी नीड 1 इंच. એટલા માટે મેં તમને ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું હતું કે તમે મને ટેબલ આપો. બરોબર, 1 inch is equal to I think 2.54 centimeter. Are you getting this or not?
આ બધાને દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર? हाँ सर Yes, दिख sir. रहा है। Okay. So our ultimate goal is we will convert that 1 kilometer into the inch. So how we will convert that? That our RF, that is your representative fraction, is equal to 1 inch divided by, आपको क्या करना होगा, पहले मीटर लिखना होगा, इसको मीटर कर दीजिए, 1000 मीटर। अगर 1000 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 सेंटीमीटर को आपको इंच में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको रिवर्स जाना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर हम इंच 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच होता है, तो 1 सेंटीमीटर के लिए कितना इंच होगा, है ना। ये हम भाई આપણે ગુજરાતી વાળા જે છે એને આ ત્રિરાશી કહેવાય, બરોબર ને, ना। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना इंच થાય? 0.39. 1 divided by 2.54. Is it okay? Okay. So point, what is the answer? 0.1 divided by 2.4? 0.39. Is it okay? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो इतना सारा सेंटीमीटर आया उसको हमें 0.39 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमने क्या किया, 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये इंच में कन्वर्ट होगा, है कि नहीं। आई बात समझ में। तो आर एफ must be is equal to 1, because inch would be cancel out. Okay, when we divided inch, if we divide the inch by inch, that will be the one answer. So what is the correct answer? We require a calculator. So this is our calculator. What we need to do is, मैं आपको ये इसीलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको फ्यूचर में कोई ऐसा एग्जांपल आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल करना है कि 1000 इंटू 100 इंटू 0.39, 39,000. Okay, so we have got the 39,000. Okay, so ultimate our answer will be 1 jam 39,000. હવે કેટલા લોકોને 1 jam 39,000 આન્સર આવ્યો છે? સર પહેલા આવ્યો હતો પણ મને એમ લાગ્યું મિસ્ટેક એટલે મેં પાછો કર્યો ને તો સર हाँ એમાં सर ચેન્જ सेम થઈ आंसर ગયું आया પછી। है। एक मिनट, आई विल आस्क इंडिविजुअली। ओके, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका जो आंसर है अल्टीमेट वाला आंसर, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है कि नहीं। ये आपका आंसर है। सर इस आंसर में एक मिस्टेक भी है सर। बताइए। सर यहाँ पे 39 से लेके वहाँ पे 39 से 70 होगा सर। अगर सर 1 डिवाइड 2.54 करते हैं तो 0.3970 होगा सर। ओके, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, we will keep up to 2 decimal only. Okay, if there is a 0.397, we will convert it 0.40. Okay, तो राउंड फिगर हम कर देंगे, ठीक है। Okay, so what is your answer is 1 jam 39,000. That is your answer. Okay, are you getting this or not? तो ये आनंद जे 1 jam 40,000 है, देयर माइट बी उन्होंने ये लिया होगा 0.40 लिया होगा, तो दैट इज ऑल्सो राइट आंसर। સર હા સર એવું થયું હતું। ઓકે, સરસ, ચલો વાંધો નહીં। તો તમે આ 0.39 ને 0.4 કરી શકો, है ना। So simply I can write it down 0.39 into 0.4. So that's why it is the 1 jam 40,000. Okay, but otherwise you are right. Okay, तो अब मैं आपको पूछता हूँ, ठीक है, किसको किसको डाउट है वो पूछता हूँ, कितना आंसर आया। आनंद जोशी, इज इट ओके फॉर यू?
यस सर, यस सर। ओके ओके। देन उसके बाद दीपक कुमार चौधरी, आपका आंसर क्या आया था? आपने कहाँ गलती कर दी? ये सर मेरा ये आया है 39,370.07 क्या लिया? सर 39,370.07 ओके, तो आपका आंसर क्या आया? सर 1:39:37 0.07 ओके फाइन, ओके फाइन, ओके। केविन परमार, यस सर। केविन केविन परमार। સર આ 0.390 કરવાનો ભૂલી. ઓકે ફાઇન. આમાં જ પૂછીએ, મિથ છે મિથ? હા સર. આ તમારે ક્યાં ભૂલ થઈ? વન જેમ પે લેખ આવ્યો, તમારે ક્યાં ભૂલ છે? સર તમે એક સેમી બરાબર કીધું હતું ને મેં એક મીટર બરાબર 12 ઇંચ લઈ લીધું હતું એટલે. હા, તમે કરી શકો, 1 મીટર બરાબર 12 ઇંચ તમે લઈ શકો, તો તમારે એ પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેશન કરવી પડે. ઓકે હા હા. ઓકે, ચલો આ સુધારી લેજો, તમે આનો આન્સર તમે લખી લેજો તમારા બુકમાં. હા સર, હા સર. ओके, उमेश कुमार आपकी कहाँ गलती हुई? 1:2.54 है ना, हम वहीं पे 1 लाख से 1 लाख सेंटीमीटर से डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए सर, वहीं पे मिस्टेक हो गया, वहाँ पे इंच में चेंज करना चाहिए, वो सेंटीमीटर में। सुमित अद्रोजा, સર મેં 1 સેમી બરાબર 0.39 આવ્યું ને અહીંયા જ અટકાઈ ગયો તો. अच्छा પછી ओके ખબર ન પડી. ओके, હવે ખ્યાલ આવ્યો ક્યાં ભૂલ થઈ તમારી? હા હવે રેડી. હા ઓકે, રાજકુમાર તમારે શું ભૂલ પડી? યસ સર. હા બોલો. હાલો હા બોલો બોલો. સર, મેં 0.024 લઈ લીધો, 1 કિલોમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ઇંચ. ઓકે, તો તમારે હવે બેઝિક ખબર પડી કે કઈ રીતે આપણે જવાનું છે? હા સર. ઓકે, ચાલો લાસ્ટમાં કેવિન, તમારી ક્યાં ભૂલ છે? હા સર, મેં ઓલા 0.30 એ નતું કર્યું. ઓકે, નાઉ આઈ એમ ગિવિંગ વન મોર એક્ઝામ્પલ. ઓકે, હવે જેટલા લોકોને પૂછું ને બધાનો આન્સર સાચો આવવો જોઈએ અને એક જ સરખો આવવો જોઈએ. ઓકે, you need to take up to 2 digit only after the point. Okay, okay, so I'm giving you one more example. And your scale is, okay, this is the tough one કારણ કે બે I am giving you, I have already solved 2 example, તો આ તમારે એ પ્રમાણે જરાક sort out કરવાનો છે. ઓકે, so I am giving your scale is okay, I'm just simplified it. 5 centimeter is equal to 100 kilometer. Okay, so convert this scale into RF. That is your problem. તો સર આમાં આપણે 1 કરતા હતા એની જગ્યાએ 5 કરવાનું ને? હા, જે તમે સોર્ટ આઉટ કરતા હોય તમે કરી જો, બરાબર? પછી હું તમને આન્સર પૂછું. ઓકે, ઓકે. so this is your problem. Now give me the solution, we will ask for it. Okay, I'm giving you 5 minutes.
जिन लोगों को ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है वो सिंपली चैट बॉक्स में यस लिख दे, ठीक है। विकास देत्रोजा छे। And meanwhile you can write down your enrollment number in the chat box. Okay, Parth Kakkad, what is your answer? Tell me. Parth. Yes, sir. What is your answer? Sir, 1 gem 20 lakh. 1 gem 20 lakh. Correct me, हाँ? एक मिनट 20 लाख થઈ ગયા ને? Okay. ચાલો another one. બીજા કોને complete થયો છે? Simply they can write down yes. उमेश कुमार, आपका पूरा हुआ? यस सर। 5 जेम सर 1 जेम 1 उमेश 5 कुमार, जेम 5 जेम नहीं, ये आपका गलत है। वो आपको 1 जेम 1 से मिलियन start करना है। 1 जेम सर 5 जेम 1 मिलियन है। आप समझिए, आपको 1 जेम से ही स्टार्ट करना है, 5 जेम नहीं होता है ना। कन्वर्ट कीजिए उसको वापस से। उमेश, ठीक है। सर संतोष बोला सर। हाँ संतोष, बोलो संतोष। 1 जेम से 20 लाख। 1 जेम 20 लाख। ओके। રાજકુમાર વૈષ્ણવ, તમારો શું સ્ટેટસ છે? રાજકુમાર, दीपक कुमार चौधरी, आपका आंसर? 1:20 लाख। 1 जेम 20 लाख। अब आप सही पकड़े हो, है ना। ये सबसे टफ क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी आपने आसानी से पार कर दिया, ठीक है। 1 जेम 20 लाख। हेलो सर। हाँ રાજકુમાર બોલો છો સર? हाँ बोलो बोलो। What is your સોરી answer? સર, ઓલો લીવ થઈ ગયા, ઓલું લીવ થવાઈ ગયું હતું, નેટવર્ક એરર છે ને એટલે. Okay fine, okay. What is your answer? 1 જેમ 2 lakh. 2 લાખ જ આવ્યો, બાકી બધાને 20 લાખ આવે છે હો. સુધારી લ્યો, ચલો મને પછી તમારે કરેક્શન આપવાનું છે। હા સર, પાછું કરેક્શન આપું છું। ओके आ गया सर 1 जेम 20 लाख। हाँ हाँ 1 जेम 20 लाख, ठीक है सेम ही आ रहा है। ठीक, अब क्या है कि आप जो है कि इंजीनियर की तरह आंसर दे रहे हो, ठीक है। सबका आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है। पहले क्या था, हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, क्या सबके आंसर अलग अलग आ रहे थे, ठीक है। तो अब जो है मैं इसका आंसर जो है वो मान लेता हूँ। हम क्या करेंगे ब्रीफली मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। इस किलोमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 होता है, ठीक है। 1000 मीटर। वापस से 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 सेंटीमीटर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना होगा, इस स्केल को हमें पहले 5 सेंटीमीटर में से आपको क्या करना होगा, कन्वर्ट करके 1 सेंटीमीटर पे लाना होगा। तो आपको क्या लिखना होगा, अवर स्केल इज 5 centimeter is equal to 100 kilometer. So we can divide both sides divided by 5. So if we divide this 5 centimeter divided by 5, we will set it out the 1 centimeter must be is equal to 100 divided by 5, that is 20 kilometer. ये 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर स्केल को हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर लिख सकते हैं, है ना। तो अब आपके लिए वापस से आसान हो गया। इसको क्या करना है, सिंपल, अब जो है 20 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आरएफ आ जाएगा 1 जेम 20 लाख। दिस इज द राइट आंसर। ओके फाइन। अब आपको इससे भी एक आसान एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको ये आंसर आ जाएगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। मैं बड़ा रखता हूँ 2 सेकंड के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो ये जो एग्जांपल है, मैं अब क्या है कि दिस इज अवर एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2, ओके। ठीक है, तो ये एग्जांपल में आप वापस से यहाँ पे दूसरी साइड रख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में जो ये पूछा है वो भी हम साइड में रख देते हैं, ठीक है।
ठीक है, अब मैं आपको क्या है कि एक एग्जांपल दे रहा हूं जो इससे भी आसान है, ठीक है, लेकिन जिसका फंडा क्लियर होगा उसको ये आज आसानी से आ जाएगा, ठीक है। सो योर प्रॉब्लम इज so I'm giving you a scale example number 3. I'm giving you scale is 1 yard on the map must is equal to 50 mile on the map. So you need to, what you need to do, convert scale into RF, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको क्या है कि जो कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है उसको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं भी इसको कैलकुलेट करने के लिए 5 मिनट देता हूँ, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, है ना। सो दैट इज योर एग्जांपल नंबर 3। आपको 1 यार्ड इज इक्वल टू 50 माइल को कन्वर्ट करना है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में। जिसका कंप्लीट हो जाता है वो यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है, ताकि मैं उसको आंसर पूछ सकूं, ठीक है। अगर इसमें कहीं डाउट है तो आप मुझे इस एग्जांपल कैलकुलेशन के बाद आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, आप कर रहे हो एग्जांपल, जिसका भी कंप्लीट हो जाए वो यस लिख सकते हैं, ठीक है। ऋतिक वाजा, यस, ओके, वेरी नाइस। खंजन परमार छे खंजन, खंजन यस सर। परमार, हाँ हाँ, તમારે કેટલે પહોંચ્યું કામ, મને મોકલો જોઈએ। ના સર કરું જ છું।
હા, મને આન્સર આપો. બરોબર, હા, મ્યુટ કરી દો માઇક. Okay, so enough time is given to you. Okay, now I am asking randomly. Okay, Rajkumar Vaishnav, what is your answer? એક જ મિનિટ કરું છું. ઓકે, તો ઓકે, ચલો પછી બીજું કોને કમ્પ્લીટ થયું છે? દીપક કુમાર ચૌધરી, what is your answer? Yes, sir. आपका आंसर क्या आया? 1 जेम 1 जेम. What is your answer? 1:88,000, sir. क्या बोल रहे हो आप? 1 जेम 1 ratio हाँ 88,000. 88,000. This is your answer. Yes, sir. Okay, fine. So let us. ये भी હાલો સર, હાલો. हाँ राज बोलो. 1 જેમ સર 88,000. અને તમારો સ્ક્રીનશોટ વિડિયો ચાલુ કરીને બતાવો તમે કેલ્ક્યુલેટ કરેલું છે. on your video. કુંજ તમારો માઇક ચાલુ છે. રાજકુમાર વૈષ્ણવને આપણે પિન કરી દઈએ. હા, show me your class book. 1 મિનિટ સર. ઓકે, what you have done step by step आप તમારે સમજાવવાનું છે. ઓકે, आपको ये समझाना है one by one. ओके नाइस. सो आपने सबसे पहले क्या किया? आप उसका फोटोग्राफ लेके अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए हमारे साथ. आप आपके नोटबुक का फोटोग्राफ ले लीजिए और वो स्क्रीन शेयर कर दीजिए. હા સર, એક જ મિનિટ. ઓકે, ત્યાં સુધી આપણે બીજાને પૂછીએ સ્ક્રીન શેર ના થાય ત્યાં સુધી. મીત કવાર, what is your answer? સર 1 જેમ 88,000 જ આવે. ઓકે, શું કર્યું તમે આમાં મને વર્બલી કહી દો. સર 1 યાર્ડ બરાબર 50 માઇલ થાય. ઓકે, એ કેવી રીતે ખબર પડી? સર મેં ગૂગલ ઉપર જોયું. અચ્છા, ગૂગલ ઉપર જોયું. હવે 1 યાર્ડ એટલે કેટલા ફૂટ થાય? 1 યાર્ડ એટલે સર એ કઈ ખબર નથી. હા, હું એ જ કહું છું કે ભાઈ તમે 1 યાર્ડ એટલે મેં માઇલ આપ્યું, બરોબર? આ તો હું અહીંયા 50 ફૂટ આપી દઉં તો તમને ના આવડે ને એક્ઝામ્પલ? ના સર. બરોબર, 1 યાર્ડ એટલે કેટલા ફૂટ થાય? હા, કોઈને ખબર છે? 3 ફૂટ સર. 3 યસ, યુ આર રાઈટ. 1 યાર્ડ એટલે 3 ફૂટ થાય. હવે આપણે વારમાં કહીએ ને કે 150 વારનો પ્લોટ છે, બરોબર? સો ધેટ ઇઝ યોર યાર્ડ, બરોબર? તો 1 યાર્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 ફીટ. ધીસ ઇઝ ઇન ધ લેન્થ. હવે તમે એરિયામાં જાઓ તો પણ એ જ કહેવાય. 1 યાર્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પણ ફૂટ કેટલા થઈ જાય? 3 × 3 9 ફૂટ સ્ક્વેર. સમજાણું? ક્લિયર? મિત સમજાય છે હું શું કહું છું? ઓકે ઓકે સર. ઓકે, ચાલો બીજું કોણ છે? યશ પરમાર છે? યશ પરમાર નથી?
ઓકે, તો શું થયું રાજકુમાર, તમારા આન્સર નું શેર કરો છો? હા સર, આ ઓલું સર ન થતું પ્રેઝન્ટિંગ, તમને ઓલો કેમેરા. ઓકે, આપણે રાજકુમાર ને પિન કરી દઈએ. હા, બતાવો. હા, બેક કેમેરો લઈને તમે ખાલી બતાવી શકશો. ઓકે, તમે શું કર્યું પહેલા? હાલો હા હા, બોલો. હાલો હાલો. Okay, so show me your send me your photograph into WhatsApp. Okay, WhatsApp મને કરી દો. Okay, so I'm કરી દો સર. once again sharing with you. I hope that you are all are getting with that. If any kind of doubt in this, any kind of doubt, किसी को भी डाउट है इसमें? ना सर। Anybody? हेलो सर। हाँ हाँ, कौन? अंकित। अंकित कुमार, हाँ बोलिए। बोले कि सर यार्ड वाला सर बनाना ही है मेरे से। अच्छा अच्छा, तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जो है आपको एग्जाम्पल। ठीक है, मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। कि आपको पहले तो क्या करना होगा, ये जो माइल है, ठीक है, माइल को आपको कन्वर्ट करना होगा यार्ड में, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइल क्या है कि यार्ड क्या है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल बता देता हूँ। ये दोनों जो है वो लेंथ के यूनिट है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगा 1 माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, दैट इज 1.6 किलोमीटर, ठीक है। फिर मैं अगर वापस से बोलूँ 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, ना। तो अब मेरे नॉन यूनिट क्या आ गए कि मैं यहाँ पे 1 यार्ड की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3 फीट। तो हमारी स्केल बन गई तब हमारी स्केल क्या बन गई, हमने 1 यार्ड की जगह कितना लिख सकते हैं, 3 फीट लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 50 माइल की जगह हम क्या कितना किलोमीटर लिख सकते हैं, तो 50 माइल इंटू 1.6 किलोमीटर लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कितना हुआ। तो हमारा स्केल हो गया 3 फीट इज इक्वल टू 16.5, 80 किलोमीटर लिख सकते हैं ऐसा, यस सर। है ना। तो वापस से, तो हमने 1 यार्ड इज इक्वल टू 50 माइल को किस में कन्वर्ट किया, हमारे जो नॉन यूनिट थे उसमें कर दिया। अब मैं वापस से मुझे 3 को 1 बनाना है, तो दोनों को डिवाइड बाई 3 कर दूंगा। तो हमारा स्केल कितना हो गया, 1 फीट इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर, है ना। तो वापस से कैलकुलेटर में जाइए, 80 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, 80 डिवाइडेड बाई 3 26.67। तो हमारा 1 फीट इज इक्वल टू 26.67 किलोमीटर ऑन द मैप। तो इस स्केल का मतलब क्या हुआ कि 1 फुट आप अगर मैप में बनाते हो, ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, 26.67 किलोमीटर। लेकिन आप क्या है कि 1 फुट का जो है वो मैप मैप अगर मास्टर प्लान है तो उसमें आप फुट में जा सकते हो। अगर छोटा आपका प्लान है, A1 साइज में आप ड्रॉ करो, तो उस फीट को भी आपको फर्दर डिवाइड करना होगा छोटे यूनिट में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो अभी हमें सिंपल क्या करना है कि इस किलोमीटर को 26.67 किलोमीटर को फीट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वापस से वही चीज, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर, है कि नहीं। ठीक है, फिर अगर हम 1 मीटर बताए तो उसमें डायरेक्ट हम बोल देते कितने फीट आते हैं, वो आपको नहीं पता है तो डायरेक्ट आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, समझ में आया। तो हमें किलोमीटर को फीट में डिवाइड करने के लिए कितना करना पड़ेगा कि आपका आर एफ कितना होगा, आर एफ इज इक्वल टू 1 फीट डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा आपको, 26.67 तो है ही,
उसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप कितना करना पड़ेगा, 1000 कर दीजिए, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3.28 से, हाँ, तब जाके ये फीट में कन्वर्ट होगा। अल्टीमेटली आपका आरएफ कितना आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 26, यहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ आपका आंसर सही है कि गलत, ये पता चलेगा। 26.67 इंटू 1000 इंटू 3.28, हेलो। हेलो सर। हेलो वया गया सर कदाच। हेलो। हेलो हेलो સર નથી. હા નેટવર્ક ઇશ્યુ આ લાગે છે. सर छे आई गया बरोबर सर। बरोबर છે। सर छे प्याला કપાઈ કપાઈને આવે સર અવાજ। કનેક્શન પ્રોબ્લેમ છે, હું તમને બંને એક્ઝામ્પલ સર અવાજ કપાઈ કપાઈને આવે છે, સર ક્લિયર કપાઈને આવે છે સર અવાજ। સંભળાતું ના સર કાંઈ। સર કાંઈ ખબર નથી પડતી તમે સર શું અવાજ કયો ચોટીને છો આવે ને। છે। સર ચેટમાં લખી નાખો। સાહેબ નું નેટ ધીમું।
હાલો એલા સર ક્યાં ગયા આમાં અલા નેટ ન થવું તું ફોન કરી સર ને પૂછી દો ભાઈ નેટ નહીં આવતું હોય સરનું. રેકોર્ડિંગ છે રેકોર્ડિંગ છે તો જ ચાલુ નહીં. છે ફોન કરો તો કૃપાલ કૃપાલ સર ને ફોન કર બધા લેફ્ટ થઈ ગયા. લેટ થઈ જાય ભાઈ 12:30 થઈ ગયા તો કર્યો ફોન 12:30 થઈ ગયા ના રે ના તો લેફ્ટ થવાનું એ કર્યો ફોન કોઈ કરી લે ને ભાઈ શું તું ફોન કરીને પૂછ લે ને. આવું ભાઈ મેસેજ કરી લો સર ને ફોન કરવું બોરે કરે કે કરું બધા એ કરે નો કરતા એલા હા કુંજ કરસ કે કરું ભાઈ કાકા ભાઈ ને જવાબ આપો ભાઈ ને ભાઈ બોલ ને હું છો મોરબી નો રહ્યો. કઈ જગ્યાએ તું કઈ જગ્યાએ હું મહેન્દ્રનગર બાજુ ઓહો તો મોરબી નો કે ભાઈ તું સામા કાઠ બાજુ કહેવાય હા બોલ ને પેલા ફોન કર્યો શું કહે નથી ઉપાડતો જ નથી ભાઈ રિંગ આખી હોય ગઈ નથી ઉપાડતો હા તો હવે શું કરવાનું લેફ્ટ થતા જાય બધા હવે લીવ થઈ જાવ લીવ લેફ્ટ થઈ જાવ લેફ્ટ થઈ જાઓ ઓફર શું કરવાનું હોય આ જાડા બંધ કર તારું માઈક શું કરવાનું લીવ થઈ જવાનું હે હા સુમિતભાઈ રેકોર્ડિંગ તો હજી ચાલુ છે બરો રોલ નંબર લખતા જાય હલો હાલો હા ભાઈ તારા બોલો નંબર બોક્સમાં શું તારો નંબર નંબરોમાં ગ્રુપમાં હશે લઈ જાય ઓકે હાલો સુમિત આ દરવાજા ને એક જ મિનિટ જોઈ લો શું થયું છે ના તો મોરબી માં રહી એટલે કહું એટલે કે હવે અભય કોણ હે હું નતો ન્યૂ સ્ટુડન્ટ હે તું ન્યુ સ્ટુડન્ટ 3 સેમ માંથી આવ્યો 3rd સેમ તું ન્યુ સ્ટુડન્ટ છો સોમા હા દાદા ભાઈ બન તારા નંબર શું છે બોલ ને એટલે હું ગ્રુપમાં જોઈ લો આમાં નામ નથી બતાવતા મારા કોઈને 70433 704 33 33 55940 55940 રેડી ચાલો મહેન્દ્રનગર હશે ને હા હું આવું ઘણી વાર હું સુમિત ના કારખાને આવેલો છે 5-6 કારખાના ગરીબ માણસોની મસ્તી કરે બધા કેવા ગરીબ છો અમને ખબર છે એના લીવ થાવ લીવ સાહેબ સાંભળે છે એક ટાઈમમાં